Good morning, everyone. Welcome to the last morning session of the week and of this month. We'll be starting the session soon. For today's session, we have Madhur Mundada sir with us who will be joining. We'll start with the weekly outlook कि कैसा रहा पूरा week, अगला week कैसा रहेगा. Then we'll move towards the important updates and stocks on radar, sectors on radar. And then we'll move towards the stock queries. And meanwhile, during the entire session, if we have any trade, we'll be happy to share them. In the morning session, we generally share intradays and CDIs. If you have any stock query, if you have any stock position that you need to clear, feel free to ask them in the queries. We'll be happy to revert them one by one. Prashant, if you can check with our expert, that will be great. Yes, Imranji, he will be joining us soon. Meanwhile, you can start dropping a query in the chat. All the queries that we'll take will come on first come basis. इसका मतलब अगर आप एक ही क्वेरी को 10 बार भी डालेंगे तो जरूरी नहीं है वो क्वेरी ली जाए. जिसने पहले पूछा पहले हम उसके क्वेरी को रिवर्ट करेंगे and then we'll be moving forward. I can see more people are joining in. Good morning, everyone. Good morning. Mother sir is joining in a minute. I can see everyone is excited. Good morning. Good morning. From next week, guys, this is just a reminder that we will have only two afternoon session. That is our Tuesday and Thursday session. We won't have any other afternoon session. We are doing this to ensure that we focus more on the quality part of our sessions, right? And for the others, we have 5 sessions throughout the week in the morning, along with two Rujit Sir's exclusive sessions. So we have Monday, Wednesday, Friday morning session. Then we have Tuesday, Thursday, Rujit Sir's session. And Tuesday, Thursday, we have our expiry sessions. Good morning, sir. I hope you can hear me and see me clearly. Yes, Anuj, very good morning. We are all set, sir. Everyone is waiting for you. You can share the screen, turn on the camera, and then we are good to go. Yeah, just 1 minute. So you are visible, the screen is visible, and we are good to go. Yeah, very good morning, everyone. Welcome back to the morning session. So, yesterday we have seen the volatile swings in the last hour of the session, right? Expiry, because of the monthly expiry, right? All the calls are moved by almost minimum 50 point in Nifty and the Bank Nifty as well, right? So, looking at the setup now, that Nifty may touch 25,000 in coming session. Right in June, we can expect the short covering in the Nifty and the Bank Nifty both. Bank Nifty setup is quite well better than the Nifty, right? So on a support basis, Nifty's immediate support is seen at 24,650 level, then 24,444, right? So 24,650 will act as immediate support and 24,444, while the hurdles are seen at 25,000. And if the Nifty sustains about 2550 level, we can see the momentum towards 25,400 level. So 25,000 is the immediate hurdle, and if it sustains above those level, the momentum can be extended towards 25,200, 25,400 level.
right? On a month on month basis, Nifty is slightly up by 2% and forming a higher low, higher high, higher lows on the monthly chart as well. So clear cut buy on dips is there, right? अगर निफ्टी का पूरा सेटअप हम देखें लास्ट 3 महीनों से हायर हाइज फॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं पूरा भी निफ्टी में फॉल आता है तो हमें इमीडिएट बाइंग देखने मिल रही है. So whatever the supports are there, supports are working very well and bulls are able to hold those support, right? Now I'm looking at the bank nifty. So bank nifty is just a few points away from its lifetime high, and that's why I said that bank nifty structure is much better than the nifty. So any kind of positive bias in the index will trigger the short covering in the bank nifty index, and that lift the nifty. So bank nifty is immediate support at 55 250, then 55,000 level, and the hurdles are seen at 56,000, and then the 56 500. So once the bank nifty is sustained above 55 800 zone, we can see the extension towards 56,000, then 56 500. Bank nifty is holding its near its 20 dema and it is able to hold above the 20 dema as well. So look at the chart for bank nifty from last 8 to 10 trading session. It got stuck in a 1,000 point range. 55 to 56 is a range for the bank nifty, 55,000 to 56,000 from last 8 to 10 trading session, right? Now talking about the rollovers, so I'm just checking the data for the rollover. So Nifty index started the series with a dip towards 23,850. I'm talking about the entire May series now, but the followed by strong comeback by the bulls and recovered by more than 700 points. The May series witnessed increase in the open interest by 16.4% with a rise in the price by 2.42% on expiry to expiry basis I'm talking about, which indicates the addition of long position in the index. The roller of the Nifty stood at 79.1%, which is in line with the previous month, but the good part that it is slightly above its quarterly average, that is the 78.1%. So जो निफ्टी में रोलर्स हुआ है जो लास्ट मंथ का रोलर था उसी के आसपास इस मंथ भी रोलर हुआ है, बट द गुड पार्ट जो क्वार्टरली एवरेज था निफ्टी का 78.1 उससे ऊपर रोल ओवर निफ्टी में हुआ है, राइट? द बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो ओआई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट? इस मतलब बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकता है. दैट्स व्हाई आई सेड कि 32% बैंक निफ्टी में ओआई कम हुआ है एंड जो मैं अगर एक्सपायर टू एक्सपायर प्राइस चेंज बोलूं तो इट्स ओनली अबाउट 0.6%. So OI नीचे की तरफ shift हुआ है. It's clearly indicate the Bank Nifty may trigger short covering any kind of positive bias, and if Bank Nifty sustains above 55,800 level, it can extend the move towards 56,000 and then 56,500 level. Right. So we can take some queries now, Anuj. Sir, Dilip, Buildcon bought at 490. Setup wise काफी strong है यहाँ पे. The momentum can shift towards 600 positionally. तो यहाँ पे हमारी बने रहने की सलाह रहेगी. नीचे में मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 450 is a strong support zone. So setup wise नीचे में एक बॉटम फॉर्म हुआ है इसमें, तो ऊपर में 500 का टारगेट इसमें स्लो एंड स्टडी आना चाहिए. तो यहाँ पे आप बना रह सकते हो ट्रेड में. Sir, important sectors that we should keep an eye out. Sorry. Important sectors for the Okay. next month. सो सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी डिफेंस में आप नजर रख सकते हो. हमने काफी बड़ा रन अप इसमें देखा है, बट थोड़ा भी इसमें डिप आता है तो यहाँ पे फिर से फॉलो अप आना चाहिए. लुक एट द डेली चार्ट, कितना पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे आप देख सकते हो. कंटिन्यू फॉर्मिंग हायर हाई हायर लोज. थोड़ा डिप इसमें मिलता है तो निफ्टी डिफेंस के जो सेक्टर स्टॉक्स है, बीडीएल है, बीईएल है, मैजगा डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, तो एचएल है, यहाँ पे सब में आप नजर रख सकते हो फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months पर्सपेक्टिव. Sir, NTPC Green. एनटीपीसी ग्रीन की मैं बात करूं तो ऊपर में फॉलो बाइंग ही देखने मिल रही है.
हल्का सा नीचे से डिप, हल्का सा नीचे से बाउंस हमें देखने मिलता है, बट फॉलो बाइंग देखने नहीं मिल रही। लुक एट द वीकली चार्ट, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो विक कितना बड़ा बन रहा है, इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। सो 117 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो इमीडिएट में आपको 10 से 20% का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। बट नीचे में मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 105 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो वहां पे हमारी बाय की सलाह रहेगी। सर आर पावर। तो आर पावर की बात करें तो काफी मोमेंटम में स्टॉक है पिछले कुछ टाइम से। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट ऑन अ मंथली बेसिस, स्टॉक इज अप बाय 34%। और कहीं ना कहीं एक 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, तो गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे हमारी बाय की सलाह रहेगी, या थोड़ा डिप आता है बिकॉज काफी रनअप देखने मिला है। इफ यू गेट दिस स्टॉक्स अराउंड 48-49 लेवल, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बिकॉज एक राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, और 52 वीक हाई पे ऊपर सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 60-65 इन कमिंग मंथ्स। तो डिप की वेट करें, अराउंड 50 के आसपास बाय कर सकते हो। इफ इन केस डिप नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीएमपी में बाय कर सकते हो। सीजी पावर। सीजी पावर की बात करें, पिछले 3 वीक से थोड़ा सा स्टक हुआ है रेंज में, अदरवाइज सेटअप वाइज काफी अच्छा है। 654 इज द इमीडिएट सपोर्ट ऑन अ वीकली बेसिस। डेली चार्ट में आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 2 वीक से काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। सो एक पोजन फ्लैग के वर्ज के ब्रेकआउट पे है स्टॉक। तो जो ब्रेकआउट का लेवल है दैट इज अराउंड 705 के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा। 705 के ऊपर आप इसमें यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ऊपर में 725 की इसका इसमें मोमेंटम आना चाहिए। So can I buy Airtel on the current CMP? विच स्टॉक? Airtel. ओके, एयरटेल। सी ओवरऑल अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो काफी अच्छा, और यहाँ पे आप फॉर अ लॉन्ग टर्म यहाँ पे एयरटेल में एंट्री ले सकते हो। ऊपर में आपको 2000 के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे, बट ये काफी स्लो मूविंग काउंटर है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और होल्ड विद पेशेंस। So pharma stocks view. सो लुक एट निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सो पिछले काफी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 6 हफ्तों से पूरा इंडेक्स एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है। और आप देख सकते हो जो भी फार्मा काउंटर से कहीं नहीं कि एक मिक्स बायस है सब स्टॉक्स में, एक रेंज में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात करूँ पूरा फार्मा की, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आएगा अबाउट 22,000 लेवल। 2000 के ऊपर अगर ये सिस्टम होता है तो यू कैन सी द मोमेंटम इन द फार्मा स्टॉक्स। सो एज ऑफ नाउ की बाय की सलाह नहीं रहेगी फार्मा स्टॉक्स पे, थोड़ा सा वेट करें ब्रेकआउट का इसका। जैसे इंडेक्स में 22,000 का ऊपर सिस्टम होता है तो आप फार्मा स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। The Kirlos Bros. सो डेली चार्ट में थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, और सपोर्ट इज सीन अराउंड 1680। तो वहां पे अगर सपोर्ट के आसपास आता है स्टॉक्स तो वहां पे बाय कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ ऑन द सीएमपी यहाँ पे हमें बाय की सलाह नहीं रहेगी। Sir Canara Bank. सेटअप वाइज काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप 105 का सपोर्ट रख सकते हो। 105 के आसपास आता है तो यू कैन डेफिनेटली टेक द एंट्री इन द कैनरा बैंक, एंड स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 115 120 इन द कमिंग मंथ। Sir any intraday trade? Yeah, I am tracking that. Just give me 1 2 minutes. Till the time Anuj, you can continue with this queries. Sure, sir. Tata Motors.
Tata Motors. या सो टाटा मोटर्स की मैं बात करें तो डिस्प्ले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में रेंज में फंसा हुआ है, बट यू कैन बाय द स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं सपोर्ट्स में बात करूं तो ऑन इमीडिएट बेसिस 690 680 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड एक पोल एंड फ्लैग के ब्रेकआउट के वर्ज पे है स्टॉक, तो यहाँ पे हमारी बाय की सलाह रहेगी। ऊपर में स्लो एंड स्टडी स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 800 850 लेवल। Sir, Indo Farm. Just give me 1 minute, I'm having some issue with the internet. Indo Farm. इंडो फार्म की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक लो वॉल्यूम काउंटर है और सर्किट पे चलता है, तो बेटर है थोड़ा सा इसको अवॉइड करते चले। और सेटअप वाइज भी काफी वीक है, जब से लिस्टिंग हुआ है तब से कंटिन्यू लोअर लोस फॉर्म हो रहा है, तो बेटर है इसे अवॉइड करना चाहिए। So Varun Beverages. On a weekly basis, stock the formation is kind of negative pattern and कहीं ना कहीं नीचे ऊपर के लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है स्टॉक में। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पे 450 द इमीडिएट सपोर्ट, वहां पे आप फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे सकते हो आप। Sir, Lloyd Metals. उस पे अनुज Lloyd Metals. कैन यू स्पेल Okay, sorry. LLOYDS. एल ओ OY. वाई? हाँ. ओके, सो strong setup है काफी, स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ द राउंडिंग बॉटम एंड यहाँ पे हमारी बाय की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लग रहा है कि 1600 के टारगेट इसमें बनना चाहिए। और मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 1350 द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अगर डिप में मिलता है तो बेटर है, और या तो फिर आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। इवन डिप भी आता है तो वहां पे आप फ्रेश इसमें एडिशन कर सकते हो, तो यहाँ पे ऊपर में 1650 के टारगेट इसमें आना चाहिए। Suzlon. Suzlon is up by more than 10% today, all because of its result. It came yesterday quarterly result, and the पूरे month की बात करूँ तो on this in this entire month the stock is up by 30%। और जो एक lower lows का formation हो रहा था उसको negate किया है और stock is ready to touch again its previous high, that is 85 level। So यहाँ पे हमारी buy की सलाह रहेगी। Obviously today's stock is up by 11%, तो थोड़ा dip का वेट कर सकते हो आप। डिप में अगर मिलता है अराउंड 68 69 लेवल, तो वहां पे हम हमारी बाय की सलाह रहेगी। इवन कुछ टाइम पहले हमने जो इसका सपोर्ट का डिस्कशन किया था अराउंड 62 63 लेवल, वहीं से सपोर्ट लेके आप देख सकते हो 73 अभी स्टॉक प्राइस हुआ है आज। तो ऊपर में स्टॉक इज रेडी टू टच 85 एंड देन 100 लेवल। Sir, Exide Industries. Before that, Anuj, one stock on the radar for the intraday, that is a Paras Defense, trading at the 167 with the upside target towards 1699. You have seen the good momentum across the defense space, and पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे पारस में नजर आ रहा है हमें विद गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। So what's the stop loss?
stop loss will be around 1650. Coming back One to more the stock on the quick. radar, that is the LG equipment. Anuj, one more stock on the radar for the intraday, that is the LG equipment. Okay. The stock is trading around 520 with a stop loss of 514 for the upside target towards 530. We have shared both the trades, everyone. Please check the pin section. Coming back, sir, Excite Industries. So एक slow moving counter है ये और for positional purpose you can definitely take the entry around 370 level, right? 370 के आसपास strong support area है. ऊपर में आपको 390, 400, 420 के टारगेट्स में देखने मिलेंगे. So Vodafone idea. Overall अगर इस bigger time frame में करूँ on a monthly basis, stock is in a downtrend and it made a high around 19 in last June और वहां से कंटिन्यू स्टॉक इधर डाउनफॉल. सो एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है उसका उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट इट्स बेटर टू अवॉइड, राइट? वी हैव सो मेनी अदर काउंटर्स एंड इससे बेटर काउंटर्स है अपने पास, सो वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. बेटर टू अवॉइड द वोडाफोन आइडिया. So Reliance Infra. So in this entire month, the stock is up by 25%. Look at weekly chart as well, forming a higher low structure on a weekly chart, and एक राउंडिंग बॉटम भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे. फ्यू डेज बैक जो कंपनी ने अनाउंस किया था, इट हैज अ डेट फ्री नाउ, राइट? सो इट बिकम अ डेट फ्री, सो वो एक काफी पॉजिटिव टेक अवे है कंपनी के लिए, और उस कंप्लीट आप देख सकते हो चार्ट पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. तो सेटअप वाइज काफी अच्छा है. ऊपर में स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स ऑन इमीडिएट बेसिस 350 आना चाहिए. 350 के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 400 लेवल. Sir, Zomato. सो जोमेटो की बात करें तो इट गॉट स्टक इन रेंज. नीचे में 220 आता है और ऊपर में 244 के आसपास अटकता है. सो एक 20 से 25 पॉइंट के रेंज में स्टॉक स्टक हुआ है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स. सो 2 महीने की मैं अगर रेंज की बात करूं तो नीचे में जैसे मैंने बताया कि 215 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर में 244 पे वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है. तो इन बिटवीन रेंज के आसपास आप प्ले कर सकते हो. अगर ये 244 के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स ऊपर में आप जो प्रीवियस लेवल से इसके 275 280 आपको वहां पे दिख सकते हैं. और सेटअप बस काफी अच्छा है, तो यहाँ पे आप नजर रख सकते हो. Sir, Yes Bank. एस बैंक की बात करें तो 16 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया था, वहां से एक क्विक हमें मोमेंटम देखने मिला है. पिछले 3 हफ्ते की मैं बात करूँ, नैरो रेंज फॉर्म हो रहा है. सो 2150 के ऊपर इसका ब्रेकआउट रहेगा. 2150 के ऊपर अगर किसी को ट्रेडिंग पर्पज से लेना है तो 2150 के ऊपर अगर निकलता है तो एक 3 से 4% का मूवमेंट आपको इसमें देखने मिल सकता है. Hudco. फूड को पोजिशनल बेसिस काफी अच्छा हमें लग रहा है. तो किसी को 2 से 3 महीने के हिसाब से लेना है तो यू कैन डेफिनेटली टेक द एंट्री इन द फूड को. एक 15 से 20% का मोमेंटम यहाँ पे आना चाहिए. सेटअप वाइज आप देख सकते हो ऑन वीकली फ्रेम फॉर्मिंग हायर टॉप हायर बॉटम. लुक एट द मंथली सेटअप एज वेल. मंथली सेटअप में भी काफी अच्छा सेटअप है यहाँ पे. डेली में आप देख सकते हो एक रेंज में अटका हुआ है और रेडी है कि एक अप मूव इसमें आना चाहिए. सो ऑन अ पोजिशनल बेसिस यू कैन डेफिनेटली टेक द एंट्री. 15 से 20% इसमें मोमेंटम आना चाहिए. Motherson. सो मदरसन की बात करें तो ऑन डेली फ्रेम सेटअप काफी अच्छा है यहाँ पे. ऑन इमीडिएट बेसिस
151 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। ऊपर में आपको 155 160 62 के आसपास टारगेट आना चाहिए। RR cable. सो आरआर केबल की बात करें तो डेली चार्ट में कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे नीचे में 1250 का सपोर्ट है और ऊपर में 1360-70 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ना डेली चार्ट अगर मैं बात करूँ तो 1370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ऊपर में आपको 4 से 5% का मूवमेंटम मिनी बजट आना चाहिए। और नीचे में सपोर्ट जैसे मैंने बताया कि 1250 के आसपास सपोर्ट है। Lakshmi Organic. सो स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव बायस है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बॉटम तो बना है पर ऊपर में फॉलो बाइंग हमें देखने नहीं मिल रही है, ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने मिल रही है। और इमीडिएट बेसिस में अगर हर्डल्स की बात करूं तो 210 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 210 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बेटर है, वहां पे आप एंट्री ले। या तो मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 170 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। बेटर है ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए यहाँ। Lemon tree. तो लेमन ट्री का सेटअप वाइज काफी अच्छा है। यहाँ पे लुक एट डेली चार्ट एज वेल, यहाँ पे भी हमारा एक पॉजिटिव बायस का सेटअप बन रहा है। तो नीचे में मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 139 इज इमीडिएट सपोर्ट। बट यहाँ पे आपको वही जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे आप पोजिशनली एंट्री ले सकते हो अराउंड 138 के आसपास। ऊपर में आपको स्लो एंड स्टेडी 150 के टारगेट्स में देखने मिले। So guys, this will be the last query for the day. ABB. एवी B. कैन यू रिपीट अनुज? ABB. अच्छा एबीबी, ओके। So we are seeing a good momentum in the capital goods stocks, but ABB से बेटर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एलएनटी पे आप फोकस कर सकते हो। थोड़ा सा इससे बेटर स्ट्रक्चर है एलएनटी का, तो मेरी बाय की सलाह एलएनटी पे रहेगी। आप एलएनटी पे फोकस करें। यहाँ पे आपको 3 से 4% का मोमेंटम इसमें एलएनटी में आना चाहिए। So guys, that will be all for today's morning session. Thank you everyone. Thank you Madhu sir. We will be having the afternoon session at 2:30 p.m. And guys, again, please note that from next week we have only 2 afternoon sessions. Thank you everyone, and Madhu sir, see you again on Tuesday. Thank you.